ओके प्रभु जी, मैं होस्ट। आप, हाँ मैं होस्ट, एक मिनट में चेंज करता हूँ मेरा नाम।
होस्ट हूँ ना अभी मैं, देखिए आप आप होस्ट नहीं हो, मैं होस्ट हूँ। एक मिनट।
Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare हरे कृष्णा ढूंढो ढूंढाओ गुरु जी आप लोग सुन चलो
Jai Goracham Jivan Hare Krishna Hare Hare Krishna, Hare Jai Goracham Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
అది పెట్టి కనెక్ట్ చేస్తున్నా.
Hare Krishna Prabhu. Hari Hari, Jai Ho. Thank you very much. बहुत सुंदर सा भजन था। और बद्रगौर छुट्टी है अभी? छुट्टी है अभी स्कूल में? हाँ प्रभु जी। हरी हरी। ओके, आपका सिस्टर बोथ साइड में है। तो सभी भक्तों के लिए जो आज कीर्तन किया उनके लिए श्याम देश की तरफ से बड़े हरे कृष्णा मंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। गोविंदारी प्रभु जी ज्वाइन किया है क्या? चल चेक करना। हरे कृष्णा प्रभु। As Prabhu ji joined, Govindari Prabhu can just check. Make him the host also. Prabhu, I couldn't see him. Okay, we'll wait for 3 minutes. What name is it? Govardhan Sayo. It's not the thing I think. It's not the. Can you make me the co-host also? Yeah, 1 minute, bro, 1 minute. Yes, Prabhu, done. Let's see, Govardhan. No, there is हरे a कृष्णा different. प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गोवर्धन, आप कहाँ रहते हो? गोवर्धन प्रभु, आप कहाँ रहते हो? आपके बारे में शंका हुआ कि आप वही गोवर्धन नहीं जो आज क्लास ले रहे हो, इसलिए आपको स्पॉटलाइट कर देंगे। आप कहाँ रहते हो गोवर्धन? हरे कृष्णा। Oh, I think Prabhu is not joined yet. हरे कृष्ण प्रभु जी। शायद गोवर्धन प्रभु डर गया वो इधर उमल क्वीन नया सनैया में रहता है। वो हमारा थर्सडे क्लास में ज्वाइन होता है। अच्छा तो अच्छा। उसको लिंक भेज देता हम लोग, तो हमारा उमल क्वीन का वहां से बहुत सारे ज्वाइन हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। उनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है उनका? गोवर्धन क्या है? गोवर्धन साव करके है वो। ये लोग है ना, अर्जुन प्रभु है हमारा, उनका कुछ ये यूपी बिहार के है, यूपी बिहार के नहीं लोग। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ये अच्छी बात। हरे कृष्ण प्रभु है ज्वाइन, प्रभु है ज्वाइन। गोवर्धन प्रभु ज्वाइन? यस यस, आए ना। वेरी जी वेरी जी वेरी जी। आए, सामने दिख रहा है ना कैमरे में, आगे ना। हरे कृष्ण। हाँ गोवर्धन प्रभु, हरे। He is Prabhu joined on joined. 662024 name. Okay, Prabhu ji, please unmute yourself. Make me co-host, Saranam Prabhu ji. Yeah, Prabhu, done, Prabhu. Okay. Govardhan Prabhu ji, please unmute yourself. You are muted. Please unmute. Yes, yes. Now you are right. And you can focus the camera a little more closer if you can. Yeah, that's better. So welcome, Govardhan Prabhu ji. Welcome from the Dham of Jivan, all the way to Shamadesh today. And we're very fortunate to have you after a very long time. So give me a minute to introduce your grace. I hope the devotee are joining soon. Saranam Prabhu and Jivan, the message so that others who are not yet joined can quickly join, because I would like to have more devotees joining in today. So His Grace Govardhan Prabhuji has been with ISKCON from a very young age of his in Costa Rica, and over 35 years of service in ISKCON. And he's a senior disciple of His Holiness Guru Prasad Swami Maharaj, who is a GVC in that area. We are not yet fortunate to have His Holiness here, but I am sure Prabhuji will bring him also. And Prabhuji is also specialized in a very unique seva that he does for over many years, that is to serve
very old devotees who are not able to take care of themselves and who are in the last stage of their life. I've seen him taking care of so many cancer patients, and even our god sister who was from Brazil many years back who passed away in Vrindavan. And he also takes care of devotees who are coming in and going out the dham and giving them the tours, mercy, showing them around and taking care of them. During this cold season also, he takes a special seva opportunity to give blankets and hot things to hot clothes to so many Vaishnavas who don't have this facility and they are suffering, and it's very cold in Vrindavan. So Prabhuji is extremely merciful, and he is very, very humble. So I'm always very happy to have his association. So welcoming Prabhuji, the big Hare Krishna mantra to Shamadesh with the class. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. I'm very happy to be with all my dear बोले Kamadesh, हाँ Bhakti, friends, हेलो हाँ and बोलिए brothers, all Vaishnavis and Vaishnavas. So Mani is translating. Yes, Yamango Prabhuji. लेके आओ करो जो भी करना करो ठीक है ओके Yamango Prabhu, please. ओके 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 ठीक है ओके बिल दे दो मेरे को ठीक है Hare Krishna. Yamango Prabhuji, please mute yourself and speak, and can ओके you take हाँ translation? बोलिए हाँ तो अभी हम जो हमारा बहुत सौभाग्य आज हमारे बीच में हिज ग्रेस गोवर्धनधारी प्रभु हैं वो हमारे बीच में पधारे हैं और ये बहुत ही बचपन से ही बोल सकते हैं हम या बहुत ही जवानी से ही ये जुड़े हुए हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महान हमारा संघ से और इनको है ना इनको जो है देखा जाए तो इनका बहुत सारी इनमें योग्यताएं भी है और बहुत सारे इनका जो विशेष इनका ये है कि जितने भी जो वृद्ध लोग वहां पे आते हैं वृंदावन में उनकी सेवा करते हैं और दूसरा गुरुप्रसाद स्वामी के बहुत ज्यादा वरिष्ठ शिष्यों में से हैं और ऐसे देखा जाए तो वृंदावन में जितने भी जो वृद्ध लोग वहां पे जब अंतिम समय में बहुत ज्यादा वृद्ध हो चुके जब चल भी नहीं पाते उनकी सेवा करके अंतिम समय में उनका अच्छे ढंग से कृष्ण भावना भावित रूप में त्याग सके और उनको जो भी सुख सुविधाएं चाहिए ठंड के दिन में जैसे ब्लैंकेट वगैरह चाहिए नरम कंबल चाहिए उनको तो वो सब उनकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं तो प्रभु बहुत काफी सक्रिय हैं और वृंदावन काफी अच्छी सेवा कर रहे हैं खासकर वो लोगों की जो बहुत ज्यादा वृद्ध हो चुके हैं So we will discuss about the Srimad Bhagavatam, second canto, 5th chapter, and sloka 34. But first, let's do one kirtan, invoking the. तो दूसरे स्कंद का 5वां अध्याय से हम जो है ना 34वां श्लोक आज के बारे में चर्चा करेंगे उसके बाद थोड़ा सा कीर्तन करेंगे हरे कृष्ण
Vrajananda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Bhakti Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jayo Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Bhakti, Itai Gora, Premanande, Hari Hari Bo. So we will read the Srimad Bhagavatam. This is the second canto for a fifth chapter. And yes, shloka number 34, sorry. Thank you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Varshapuga Sahasrante. Please repeat. Varshapuga Sahasrante. Tat Andan Udake Sayam. Tad Andam Udakeshayam. Kala Karma Swabhavasto. Kala Karma Sabhavasto. Jivo Jivam Ajivayat. Jivo Jivam Ajivyat. Varshapuga Sahasrante. Varshapuga Sahasrante. Tat Andam Udakeshayam. Tad Udakeshayam. Kala Karma Swabhavasto. Kala Karma Sabhavasto. Jivo Jivam Ajivayat. Jivo Jivam Ajivayat. Varshapuga Sahasrante.
वर्षा पुग्ग सहस्रन्ते tat andan adakeshayam तद अंडम उदकेशयम kala karma स्वभावस्तो काल कर्म स्वभावस्तो o jivam ajivayat. जीवो जीवम अजीवयात. Now, Prabhu Himango can read the translation and purport in Hindi, please. ओके हिंदी ओके प्रभु हिंदी में लेके आइए, हिंदी में लेके आइए. हरे कृष्णा. अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कर जय. श्रील प्रभुपाद की. इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युग तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे. समस्त जीवों के स्वामी ने उन सब में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया. तात्पर्य, यहाँ पर भगवान को जीव कहा गया है क्योंकि वे अन्य सारे जीवों के नायक हैं. वेदों में उन्हें नित्य समस्त नित्यों का नायक कहा गया है. जीव के साथ भगवान का संबंध वैसा ही है जैसा पिता पुत्र का पुत्रों के साथ होता है. तो गुलाब तक में पुत्र तथा पिता समान होते हैं, किंतु पिता न तो पुत्र होता है न पुत्र कभी उत्पन्न करने वाला पिता होता है. इस तरह जैसा कि ऊपर कहा चुका है, गर्भोदक्ष विष्णु हिरण्य गर्भ परमात्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और प्रकृति के गर्भ से जीवों को उत्पन्न करके उसे सजीव बनाते हैं. जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, भौतिक सृष्टि की प्रत्येक प्रलय के बाद सारे जीव भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं और सृष्टि की समाप्ति पर वे पुनः भौतिक शक्ति के रूप में गर्भस्थ होते हैं. अतः भौतिक जगत में भौतिक शक्ति जीवों की माता और भगवान उनके पिता प्रतीत होते हैं. तथा भी जब जीवन प्रदान किया जाता है तो सारे जीव काल तरह शक्ति के वजीभूत होकर अपना स्वाभाविक कार्य पुनः करने लगते हैं और इस तरह नाना प्रकार के जीव प्रकट होते हैं. अतः भगवान इस जगत को सजीव बनाने के कारण स्वरूप है. हरे कृष्ण. हरि बोल. Magyanatimrandasya kinanjana shalakaya chakshurmilitam tasmai shri gurave namaha. Mukam karoti vachalam angum lagayate girim yatkripa aham bande shri gurum dinataranam. Maum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimati Bhakti Swami Namne Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prashadine Nirvishesha Shunebhai Pachatya Shitayane. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhara Shri Sai Gaurav. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Shri Radha Shyamak Sundar ki, Shri Gaur Nitai ki, Shri Krishna Balaram ki jai. So this this particular shloka belong from the second canto of Srimad Bhagavatam. According to the Bhagavad Purana, there is a classification of the different cantos of Srimad Bhagavatam, and all are really very important, and we will explain why. First and second canto of Srimad Bhagavatam are considered the lotus feet of the Supreme Lord. यहाँ पे जो श्रीमद् भागवतम का जो जैसे पहला और दूसरा स्कंद है, तो इसमें पूरा वर्णन किया गया है और सब हमारे जो सृष्टि के बारे में, दूसरे जैसे सृष्टि कैसे होती है, फिर उसके पहले बाकी सब भक्तों की लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है. तो लेकिन ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये है ना भगवान कृष्ण के ये दोनों ही चरण है, पहला और दूसरा चरण कमल माने जाते हैं, पहला और दूसरा स्कंद.
third and fourth canto are the representation of the tights or legs of the Lord. और तीसरा और चौथा जो स्कंद है वो भगवान कृष्ण की जो है, भगवान की जो दोनों टांगे हैं. The fifth canto is the navel of the Lord. तो पांचवा स्कंद नाभि है भगवान की. The sixth canto is the chest of the Lord. और छठवां जो स्कंद है वो भगवान की छाती है. 7th and 8th canto are the arms of the Lord. और सातवां और आठवां है वो उनकी भुजाएं हैं भगवान की. And the 9th canto is his throat. और जो नौवां जो स्कंद है वो उसका कंठ है. 10th canto is his beautiful lotus face. और 10वां जो स्कंद है उनका जो मुख है, कमल जैसा खिला हुआ मुख है. And the 11th canto is his forehead. और 11वां स्कंद है उसका जो भगवान का जो ललाट है. 12th canto is his head. और 12वां जो स्कंद है उसका सिर है भगवान का. And that way, the Srimad Bhagavatam is the sound form of the Lord. और इस तरह देखा जाए तो ये भगवान का है ना, तो ध्वनि रूप है ये भगवान का, ध्वनि रूप है भगवान. ठीक है ना. Srila Prabhupada and different acharyas like Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, they emphasize that we should not jump to the 10th canto of Srimad Bhagavatam eager to hearing about the glories of the personal pastimes of the Lord in the form of Shyamasundar. तो श्री प्रभुपाद ने से हमको कई बार आगाह भी किया है हमें कि कभी भी हम डायरेक्ट है ना सीधा 10वें स्कंद पे नहीं पहुंचना चाहिए और भगवान की जो व्यक्तिगत जो लीला है उनके बारे में हमें चर्चा नहीं करना चाहिए, उनके बारे में ज्यादा हमें वो नहीं अध्ययन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, he said to his disciples once that Srimad Bhagavatam is like a mango tree with very sweet fruit. तो श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जो है उन्होंने अपने शिष्यों को कई बार बोला है कि श्रीमद् भागवतम है एक है ना आम का वृक्ष है जिसमें आम पक चुके हैं. And in order to get the fruit of the tree, these sweet and delicious mangoes, we should wait. We should not shake the tree or climb the tree. We should wait until the fruit is properly ripe. तो इससे उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे हम लोगों को अगर अभी उसमें जब आम अगर वो लग गए हैं ऑलरेडी वृक्ष में और अगर हमें रियली जो वास्तविक रूप से अगर वो आमों का स्वाद का आनंद लेना है, उनका मधुर मधुर जो स्वाद है उसका आनंद लेना है, तो हमें जल्दीबाजी करके ऊपर चढ़ के झाड़ के ऊपर या उसमें लकड़ी से उसको मार के नीचे गिराने का, पत्थर से मार के नीचे गिराने के और फिर खाने का जल्दी में प्रयास नहीं करना चाहिए. जबकि हमें उसका इंतजार करना पड़ता है कि वो आम जब खुद आके नीचे गिरेंगे, स्वतः ही आके नीचे गिरेंगे, तो उसका कुछ अलग ही आनंद, अलग ही स्वाद, अलग मिठास होती है उनकी. When the mango is ripe, it's in the proper moment to be taken, but the mango tree will give the fruit. तो ये जब एक्चुअली आम है वो जब पक जाते हैं तो वो एक सही समय होता है कि जब हमें उनको खाना चाहिए, उनका जो आनंद लेना चाहिए. लेकिन अगर उसका अगर नहीं ऐसा करेंगे तो हमें उतना आनंद नहीं है. और हमें उसके लिए जो वृक्ष को भी मालूम है, वृक्ष भी तभी वो नीचे गिराता है जब पूरा अच्छे ढंग से पक जाता है. तो वो स्वाभाविक रूप से नीचे गिर के आम जो गिरता है उससे खाएंगे तो उसका एक अलग ही आनंद आएगा. So in that way we have to focus our attention studying the Srimad Bhagavatam thoroughly. इसलिए हमें भी जो है ना श्रीमद् भागवतम का आरंभ से ही बहुत ही ध्यान पूर्वक उसका और बहुत ही अच्छे ढंग से उसका अध्ययन करना चाहिए. Studying systematically and analyzing and studying, having the association of devotees for discussing the different topics of Srimad Bhagavatam.
तो इसलिए हम जो है ना हमें ना सब उसका बहुत अच्छे से पहले खुद भी अध्ययन करना चाहिए और सब भक्तों के साथ बैठ के अध्ययन करेंगे तो और भी ज्यादा हमें उसको ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा गहराई तक जा सकते हैं हम संग में रह के इसे अध्ययन करना चाहिए. Lord Shiva, in the Lord Shiva in Srimad Bhagavatam, he is reciting so beautiful hymns, shlokas glorifying the Supreme Lord. तो जो शिव जी जो है भगवान शिव जी वो है ना वो ग्लोरी उसका बहुत ही ज्यादा अच्छे ढंग से उसको चर्चा करें शिव जी श्रीमद् भागवतम का और बहुत ही अच्छे ढंग से उसको उसका वर्णन भी करते हैं वो और जिसमें बहुत आनंददायक होता है जब वर्णन करते हैं तो उसका. And in one of these shlokas, he is glorifying the lotus feet of the Lord. And he said that the lotus feet of the Lord can destroy the ignorance. तो एक उन्होंने श्लोक में ऐसा श्रीमद् भागवतम के श्लोक में उन्होंने वर्णन किया है शिव जी ने कि भगवान कृष्ण के चरण कमल है वो चरण कमल का अगर हम दर्शन करेंगे तो हमारा अज्ञान का अंधकार दूर होता है. And then he is very anxious. He is very eager to take darshan of the lotus feet of the Lord. और वो ना बहुत ही ज्यादा जो है ना उत्सुक है बहुत ज्यादा उत्सुक है भगवान का जो दर्शन करने के लिए भगवान के चरण कमल का दर्शन के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है बहुत ज्यादा उत्साही है वो. So this is the way how the devotees should proceed. ये जो है एक तरीका है जिससे कि जो भक्त लोगों को है ना वो कैसे आगे बढ़ना चाहिए. Srila Prabhupada says in the purport of this particular shloka that when devotees want to take darshan of the Lord, they are meditating in his transcendental form, and this meditation starts fixing the mind in the lotus feet of the Supreme Lord. तो ये जैसे इसमें बता रहे हैं ऐसे जो वर्णन किया गया कि जब भी हमें भगवान कृष्ण का जो दर्शन करना है तो पहले हम उसके चरणों से आरंभ करते हैं और चरणों से आरंभ करके फिर ऊपर की तरफ क्रम से जाते हैं. So that's why when we are worshiping the Lord with the lamp, we are starting offering the lamp to his lotus feet. इसलिए जब हम दीपक को जब आरंभ करते हैं उसका जब अर्पण करना चाहते भगवान को उसके अर्चना करते हैं तो उसको अर्पण करने के टाइम पहले दिए को सबसे पहले उनके चरणों में हम दिखाते हैं भगवान के. According to the Bhakti tradition, the lamp means our heart. We offer our heart to the Lord. तो जो एक्चुअली भक्ति जो पुस्तकों के अनुसार कि हमें जो जब हम उसको भगवान को ये जो अग्नि का लैंप जो दिखाते हैं इसका मतलब हम अपना हृदय भगवान को अर्पित कर रहे हैं इसका मतलब. So this first and second canto of Srimad Bhagavatam, his lotus feet, are the foundation of this Vedic knowledge. इसलिए पहला और दूसरा स्कंद है ये भगवान के चरण कमल हैं और ये है ना जितने भी जो वैदिक ज्ञान है उसका ये नींव है. So, for example, the first canto, the topic discussed in the first canto is Sarga, the universal creation by the Supreme Lord. इसलिए सर्ग बोला जाता है इसको तो जो है ना जितना भी जो सृष्टि की रचना है भगवान के द्वारा उसके बारे में इसमें सर्ग में उसके बारे में चर्चा की गई वर्णन किया गया सृष्टि की रचना के बारे में सर्ग में. And the second canto is about Visarga. This is the secondary creation by Lord Brahma. तो ये है ना फिर दूसरा जो स्कंद है उसको विसर्ग कहा गया है. इसका मतलब जो उसकी जो प्राथमिक रचना पहले सृष्टि की रचना ये है ना जो उसकी जो द्वितीय रचना है उसकी जो ब्रह्मा जी के द्वारा की गई द्वितीय सृष्टि की रचना है. That's why in the first canto of Srimad Bhagavatam, it is called
the creation, and the second canto of Srimad Bhagavatam, it is called the cosmic manifestation. इसलिए जो है ना पहला स्कंद है वो सृष्टि की रचना कहा जाता है, और दूसरा ये है कि जो दूसरा जो स्कंद है वो सृष्टि का प्राकट्य है, वो कहा जाता है, सृष्टि का प्रकट होना. So in order to know the Supreme Personality of Godhead, to understand His glories, His name, His pastimes, and everything related to Him, we have to establish one very strong foundation. And that foundation is found in the first and second canto of Srimad Bhagavatam. इसलिए अगर हमें भगवान को के करीब पहुंचना, उनको अच्छे ढंग से समझना है, तो इसलिए पहले हमें वैदिक ज्ञान का बहुत अच्छा एक नींव खड़ा करना पड़ेगा, जिसके ऊपर हम चढ़ के भगवान को के पास हम उसके समीप जा सकते हैं, उनके निकट जा सकते हैं, समझ सकते हैं. इसलिए जो पहले जो दो स्कंद है, पहला और दूसरा, उसको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है. So in this particular second canto that we are studying, it is called the cosmic manifestation. Parikshit Maharaj, he asked in the sixth sloka of this, we are in the fifth chapter, but in the fourth chapter, in the sixth sloka, number 6. So Parikshit Maharaj is asking to Shukadeva Goswami to please explain about the creation of this universe. तो यहाँ पे जो है ना, इसके जो चौथा जो अध्याय है, अभी तो हम 5वां अध्याय चल रहा है हमारा, चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा है, सुखदेव गोस्वामी को कृपया करके मुझे इस सृष्टि का जो कैसे उत्पत्ति, कैसे उसका प्राकट्य होता है सृष्टि का, वो हमें कृपया करके बताइए. And it's in the 12th shloka when Shukadeva Goswami starts his speech regarding the creation of these universes. तो फिर 12वें जो श्लोक में है ना, सुखदेव गोस्वामी ने फिर ये जो ये सृष्टि की जो रचना है, उसके बारे में उन्होंने वर्णन करना आरंभ किया है 12वें श्लोक से. And he starts glorifying the Supreme Personality of Godhead, Krishna. और इस तरह से वह ना भगवान कृष्ण को है ना, उसका बहुत ज्यादा गुणगान किया जा रहा है, उसका प्रशंसा की जा रही है भगवान कृष्ण का. And like that is going on, glorifying in different ways the Lord. इस तरह से वह ना लगातार उसका जो भगवान का गुणगान प्रशंसा करते जा रहे हैं, और अलग अलग ढंग से उसका प्रशंसा किया जा रहा है. So the name of this chapter, the 5th chapter we are studying, is the cause of all causes. इसलिए ये जो 5वां अध्याय जो हम अभी जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, इसका जो शीर्षक है वो सब कारणों का कारण, ये उसका शीर्षक है. So in the last shloka of the 4th chapter is when Shukadeva Goswami, he said to Parikshit Maharaj, "My dear King Brahma," he is explaining that my dear King Brahma, the firstborn, he was asked by his son Narada Muni regarding the origin of the creation. तो यहाँ पे जो ये जो है ना, जब ये आखिरी जो श्लोक है, चौथे अध्याय के आखिरी श्लोक में आप देखेंगे कि उसमें है ना, तो नारद मुनि अपने उसको बोले हैं कि आप तो इस सृष्टि के राजा है, आप सृष्टि के पिता हैं, सब कुछ आप हैं. तो उससे फिर इससे प्रश्न पूछ रहे हैं नारद मुनि ब्रह्मा जी से. So this last shloka of the 4th chapter is we can say is provoking the topic coming up in the 5th chapter. इसलिए जो आखिरी जो श्लोक है चौथे जो अध्याय का, वो एक्चुअली जो 5वें अध्याय में क्या बोला जाए और क्या वर्णन किया जाएगा,
उसके उसकी एक भूमिका है, उसकी उसकी प्रस्तावना है, वो आखिरी का जो श्लोक है। So Narada Muni is addressing to Lord Brahma as Deva Deva. Deva Deva means that he is the chief amongst the demigods. तो यहाँ पे जो है ना, वो उनको नारद मुनि बोलते हैं कि आप देवा देवा है। देवा देवा मतलब जितने भी जो देवताओं के आप मुख्य हैं, सभी देवताओं में मुख्य आप है, मुख्य देवता बताया गया है उनको। And also he is calling him the firstborn living entity. और इसके साथ साथ उनको ये भी बोला जाता है कि आप सबसे पहले जीव जिसकी उत्पत्ति हुई यहाँ पे सृष्टि में। Having this category, having this title to be the chief amongst the demigod and the firstborn living entity, is able to, he has this knowledge about the creation, about everything, and he is able to share this knowledge. तो इससे मालूम पड़ता है कि कैसे ब्रह्मा जी को सभी टाइप का सृष्टि के बारे में सब टाइप का ज्ञान है, और वो है ना उसमें इतनी योग्यता है कि वो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान को सबको वितरित कर सके। So then Narada Muni is asking directly to him different questions regarding the creation of this material universe. तो यहाँ पे ऐसा देखा जाए तो नारद मुनि है ना, ये विभिन्न प्रकार के उनसे प्रश्न पूछते हैं, और खासकर जो विशेषकर जो सृष्टि की रचना कैसे हुई उसके बारे में पूछा जा रहा है। So he's asking to him, what is the source of your knowledge? Under which protection are you standing? Under whom are you working? What is your real position? And he's asking, do you alone create all entities with material elements by your personal energy? तो यहाँ पे फिर अभी जब ब्रह्मा जी को नारद मुनि जिसपे बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा है, उससे पहले पूछ रहा है कि आप ना एक्चुअली आपका क्या मतलब कौन सी आपकी जो उपाधि है, कौन सी उपाधि में आप स्थित है, कौन सी अवस्था में है आप, क्या आप है ना जो सृष्टि का जितना भी है जो रचना आप खुद कर रहे हैं, और आप ही सब कुछ सृष्टि की रचना का कारण आप ही हैं क्या, और आपके क्या मतलब अवस्था है, किस स्तर पे हैं आप, और आपका स्तर क्या उस स्तर पर है कि आप क्या मतलब कौन कौन सा आपका जो गतिविधियां हैं वो आप कर रहे हैं। This is the perfect example of the inquisitive person who is interested about the existence of everything. तो ये जो है ना इसके जो एक पूर्ण उदाहरण है देखा जाए कि हम सृष्टि का जो रचना करने वाले हैं, और वो कैसे अपने आप को मतलब प्रस्तुत करते हैं सबके सामने, उसका एक पूर्ण वाला उदाहरण है हमारे सामने। So the first step is, according to Bhagavad Gita, Tat Vidhi Pranipatena, we should approach to the right person and we should offer service and ask intelligent questions. इसलिए जैसे भगवदगीता में भी ये बात है, तद्दिन परिपत्ति उसमें भी कि हमें जो प्रश्न पूछना चाहिए तो वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमत्ता वाले प्रश्न पूछना चाहिए हमें। So Narada Muni, he approached to not only his father, to the Acharya of this Sampradaya. He is the first living entity created. इसलिए यहाँ पे जो उन्होंने अपने जो पिता है एक्चुअली वो जो हमारे संप्रदाय का आचार्य भी है और पहले जीव है सृष्टि में, उसको उन्होंने इसके लिए उनके पास गए अपने जो उनके जो प्रश्न है, जो भी उनके शंका है वो दूर करने के लिए। So if we remember in previous shlokas, in the beginning of the creation, there is the Mahavishnu, known as Karanadakachai Vishnu, who is lie in the ocean. तो इसलिए हम पहले देखते हैं यहाँ पे कि जो महाविष्णु है जिसको कर्णोदक्षाय विष्णु भी बोलते हैं, और वो उसमें जो कर्ण सागर, उसका नाम कर्णोदक्षाय भी है क्योंकि जो कर्ण सागर है वो लेटे हुए अपने शयन में शैया पे लेटे हुए। And from the body, from the pores of
Mahavishnu, Kanudakshai Vishnu, is coming many bubbles, and these bubbles are the Brahmanda, the universe, material universe. तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे जो जो चीजें हैं बुलबुले दिखते हैं। वो बुलबुले एक्चुअली क्या है ना, वो जो कर्णोदक्षय जो सागर में, तो वहां पे वो जो बुलबुले एक्चुअली बहुत सारे जो ब्रह्मांड है वो, जो गर्भोदक्षय विष्णु है ना, वो उसमें ब्रह्मांड में फिर प्रवेश करते हैं। वो जो हमें जो बुलबुले लगते हैं, क्योंकि उनकी सृष्टि के सामने बुलबुले ही हैं, तो उसमें ये प्रवेश करते हैं सब। So this is the first Purusha. This is the first creation. तो इसलिए ये जो आदि पुरुष है ये, और ये जो यहाँ की सृष्टि की रचना के पहले से ही है ये। And then the Lord is entering in every Brahmanda. And he is okay. इस तरह से जो है ना भगवान है ना सब प्रत्येक ब्रह्मांड में है ना गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में वहां पे प्रवेश करते हैं। So he's entering in every Brahmanda in the form of Garbhodakshai Vishnu, and he's lie down on the body of Anantashesha, and Lakshmi Devi is offering service to him. इस तरह आप देखेंगे ये जो है ना जो भगवान विष्णु है वो गर्भोदक्षय विष्णु रूप में आने के बाद में वो अनंत शैया के ऊपर लेटते हैं, ठीक है ना। So this is the second Purusha. और ये जैसा द्वितीय पुरुष है एक्चुअली देखा जाए गर्भ, ठीक है ना। ये जो है अनंत शेष है, ये द्वितीय पुरुष में आते हैं उनके। From his navel sprouts stem, and he's growing, and then one lotus feet is coming. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो जो जब गर्भोदक्षय विष्णु जब लेटे हुए हैं उसमें शयन में, वहां पे लक्ष्मी जी उनकी सेवा में लगी हुई है। शंकर जो है शेषनाग की शैया पे लेटे हुए हैं, और उसके आप देखेंगे उनकी नाभि में से कमल निकलता है, और कमल उनकी नाभि में से आप देखेंगे कैसे निकला, वो आप देख सकते हैं कई चित्रों में। And from that lotus flower, Lord Brahma appears. और उस जो है ना कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी है ना, उनका प्रकट्य होता है वहां पे। Initially, Lord Brahma, when he appears, he see around, everything is dark, everything is humid. He is completely. तो जैसे उनकी उत्पत्ति हुई थी तो उस टाइम में अकेले थे, तो एकदम वो बहुत ज्यादा उनका मन विचित्र होने लगा, और पूरा मन में बहुत सारी शंकाएं होने लगी, और कुछ समझ नहीं आया कि क्या है, मैं कौन हूँ, और किस उद्देश्य के लिए यहाँ पे भेजा गया है मेरे को। तो ये उनको हमेशा ये विचार आते हैं, और क्योंकि उस टाइम कोई भी नहीं था सृष्टि में, अकेले ही थे, इसलिए उनको उसको समझ नहीं आ रहा कि सृष्टि की रचना क्यों आया, किसके लिए आया, क्या कारण है। And different questions come to his mind: who I am, where I am, what I am doing, what is the cause of this. All these existentialist questions come to his mind. इसलिए उसके दिमाग में ये आता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और मैं क्यों आया हूँ, मेरी क्या अवस्था है, क्या स्थिति में है मेरी, और जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये है ना उसको सब ये प्रश्न उसके दिमाग में आते हैं जब वो इस तरह से वो उसमें जिज्ञासु जब बन जाता है तब। Then through his own capacity, he tried to find answer to these questions, but he could not. इससे उनके ब्रह्मा जी के दिमाग में जितने प्रश्न आते हैं उनके मन में, वो सबका एक्चुअली वो पूछना चाहता था उसके बारे में, लेकिन वो लोग अब उनको मतलब अभी तक भी उसको ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि भाई अभी जो कैसे ये हुआ है, अभी क्या करने का, क्या किसके लिए आया हूँ मैं। Because we have no capacity to understand the greatness of the Lord. क्योंकि हमें ये ऐसा क्षमता है ही नहीं कि हमें भगवान की जो महानता को हम समझ सकते हैं हम लोग। The Lord is known as Adokshaya. Adokshaya means Krishna, who is beyond the capacity of the sense. भगवान का अदोक्षक्ष बोलते हैं। अदोक्षक्ष मतलब जो वो भगवान जो कि अपने जो इंद्रियों से परे, इंद्रियातीत जिसको बोलते हैं, इंद्रियों के परे है, इंद्रियों से ऊपर, इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा जा सकता उनको। The Lord cannot be understood through our material senses. तो भगवान है ना वो एक्चुअली हमारे जो भौतिक जो इंद्रियां उनके द्वारा नहीं समझ सकते भगवान को। Then finally he
he take the position of the ignorant, inquisitive person, and then he start meditating, following the order of the Lord. That voice is coming from the sky saying to him, tapas, tapas. That means do meditation. That he was doing a devotional service, meditating. इस तरह से आप देखेंगे कि जो है ना, जब वो उनको जब उसके बहुत सारे आते हैं, शंकाएं होने लगती है, मैं क्यों आया हूँ, कैसे, हम बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो उस टाइम में भगवान के जो है ना उनको आवाज देते हैं, सिर्फ उनको एक ही आवाज है, तपा करो, ऐसा तपा करो। तो ऐसा, क्योंकि जब उनको ये आवाज आती तपा, तो इस तरह से वो उनको समझ में आ जाता है कि मैं अगर कुछ समझना है मेरे बारे में, भगवान के बारे में, तो मुझे तपा करना चाहिए। इसलिए वो फिर तप करना आरंभ करते हैं ब्रह्मा जी। Then all this transcendental knowledge is revealed in his mind. और इस तरह से जितना भी जो दिव्य ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान है ना, उसके उनके जो पूरा उन्हें प्रकट होता है दिव्य ज्ञान का। And then he is getting also the knowledge how to do his service, the service of the creation of these bodies. और इस तरह से वो है ना, उनको ज्ञान आता है कि हम कैसे सृष्टि की रचना करना चाहिए, और ये कैसे शरीर का रचना करना चाहिए हमें, वो सब उनको ज्ञान का प्राप्ति होता है उनको। So this is the process that we have to follow. We have to approach with our question and offering service to the authority, and then the knowledge will be revealed. तो इस तरह से जो है ना, हम लोग है ना, जो हमारे जो आध्यात्मिक जो हमारे जो अधिकारी है, अधिकृत जो व्यक्ति है हमारे आध्यात्मिक जीवन में, उनको है ना हम लोग है ना जाके सेवा करने का है ना, उनको खुश करने का, और उनको फिर हम जब प्रश्न उनसे पूछेंगे तो हमको स्वतः ही उनका ज्ञान आने लगेगा। हम अगर उसको आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और उनसे प्रश्न पूछेंगे, तो स्वतः ही हमें ज्ञान आत्मा से अंदर प्रकाशित होने लगता है। The Varshi Narada Muni is doing the same, approaching to his authority, to his spiritual master, Brahma, who is the head of this parampara, and asking these intelligent questions. इससे यहाँ पे जो है ना, जो ब्रह्मा जी देखा जाता है, हमें जो गुरु शिष्य परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे संप्रदाय के, और जो है ना जो बहुत ही बुद्धिमत्ता के जो प्रश्न है, बुद्धिमत्ता की जो जिज्ञासा है, जो वो जिज्ञासा करते हैं। Then Lord Brahma, when Narada Muni is asking, then he starts answering, and he is explaining that everything belongs from the Supreme Lord, who is providing the different elements, ingredients, like the 5 elements of the material nature and senses, and then the modes of the material nature and different ingredients to proceed in the creation. इसलिए जो यहाँ पे जो बताते हैं उनको कि जो जितने भी जो अभी जो हम जो सृष्टि आप देख रहे हैं, सृष्टि जो मैं कर रहा हूँ, एक्चुअली इनके जो अवयव है, इनके जो मूल तत्व है जिससे सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूँ, वो तो भगवान से आया है, वो मेरे से जो ऊपर है उनसे है। मैं इस सर्वे सर्वा नहीं हूँ, मेरे से जो ऊपर और भी है भगवान, उन्होंने मुझे ये सब दिए, तत्व दिए है, बस वो तत्व को मिला के मैं सृष्टि की रचना की है, बस मैंने और कुछ नहीं। All these ingredients or elements belong from the are originated from the external and internal energy of the Lord. तो जितने भी आप देख रहे हैं जो सृष्टि की रचना के लिए जो तत्व है, अवयव जो उसको प्राप्त ब्रह्मा जी को, एक्चुअली उनके आंतरिक और बाह्य है, ये सब उनकी शक्ति है भगवान की। And then when the ingredients are ready, the function of Lord Brahma is just to take the different elements and making the forms. तो इसलिए क्या ना, जब ब्रह्मा जी को सब ये 5 जो तत्व है, जो है ना, जितने भी जो अवयव है, 5 अवयव है, जो वो जब उनको प्राप्ति होती है उनके ब्रह्मा जी, तो उसको उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि बस उनको सबको मिला के है ना, और जो जीवों की रचना करना है उन सबको मिला के। So it is said that it is like the different parts, manufactured part of one car.
the mechanic engineer is just taking the different parts and assemble the different parts. And when the car is ready, the driver is sitting. The driver is the soul. तो इस तरह से देखा जाए तो जैसे कि एक कार के उदाहरण से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे कार को भी हमें जब उसको बनती है तो कैसे उसके पहले बहुत सारे जितने भी जो पुर्जे हैं कार के उसके जो हिस्से हैं वो सब है ना लाए जाते हैं, उनको सब आपस में मिला के कार की है ना, और उसी मतलब कीमत में जो कीमत को फैक्ट्री में मिलती है उसी में हमको मिलती है। तो वैसे ही जो हमारी जो ड्राइवर का है वो सिर्फ उसको बैठना है कार में, बाकी कार पूरा रेडी है। वैसे ही जो हमारा जो शरीर भी एक कार जैसा है और हमारी आत्मा वो ड्राइवर है। So in that way, he is explaining that he is not exactly the creator. He's just the chief engineer ensembling the different parts. इसलिए ये बोल देते थे नारद जी को ब्रह्मा जी की एक्चुअली ये है ना जो सृष्टि का जो है इसका जो वो निर्माता वो नहीं है, सृष्टि के वो नहीं है, इसके रचयिता। उनको जो भी चीजें उनको सिर्फ अवयव तत्व जो प्राप्त है उन पर सबको आपस में मिक्स करके उनको आपस में मिला के और उनके द्वारा ही सृष्टि की रचना हो रही है। So the living entities having material body, material desires are also manifested through the sense. इसलिए जो हमारी जो भौतिक जो इच्छा है वो है ना हमारी इंद्रियों के द्वारा फिर वो प्रकट होती है, इतनी भौतिक इच्छा होती है। इसलिए हमें जो भी चीज हम करते हैं तो हमारा जो इच्छा जो होती है वो हमेशा हमारे इंद्रियों के द्वारा क्या उत्पत्ति होती है। The living entity bewildered, confused about the real goal of life, is engaged in sense gratification, and this sense gratification is bringing suffering. तो इसलिए तो देखा जाए तो अभी जो जितने भी जो जीव हैं यहाँ पे एक बार जो आ गए तो उसको है ना वो उसको लगता है कि मैं आया हूँ, मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति भरपूर रूप से करना चाहिए। तो इसलिए जैसे वो इंद्रिय तृप्ति करने का आरंभ करता है और जितना उसका इंद्रिय तृप्ति करता है उतना उसको ज्यादा इच्छा होने लगती है और करो। लेकिन ये जो है they are bewildered to the level of considering the material energy as the cause of everything, that nothing is behind. तो इसलिए इसमें भी ऐसा बताया जा रहा है कि जितने भी जो हमको जो सृष्टि की रचना जिसमें जो जीव है वो जीव जो है वो पहले से ही थे एक्चुअल जीव, सिर्फ उनके शरीरों की रचना की गई है भौतिक जो तत्व मिला के, बस वो पहले से विद्यमान थे वो जीव। This material energy, known as Maya, is very powerful and is a mid servant of the Lord. ये भौतिक शक्ति देखा जाए तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है ना, जो लेकिन जो भगवान है इससे भी ज्यादा शक्तिशाली देखा जाए। So the confused living entities, bewildered, they are under the illusion created by Maya, and they are under the control of Maya, the material energy of the Lord. तो इससे जो जितने भी जो जीव हैं वो एक्चुअली माया के नियंत्रण में, जो भगवान के उसमें शरण में नहीं जाते, वो भगवान का तो माया देवी है वो है एक्चुअली जिसको भौतिक प्रकृति भी कहते हैं, वो उनको प्रभाव करके रखती है, प्रभावित करती रखती है जीवों को। But only when the person, after suffering and struggling, is feeling the need to know what is the real goal of life, that's the moment when the living entity can start overcoming the calamities. तो इस तरह से देखा जाए तो जितने भी जो चीजें हैं वो उनको जब मालूम पड़ती है तो फिर ये सब चीजों का जो जीव है वो जीव जितने भी तो उसको मालूम है कि अभी ये बहुत सारे हमें कष्ट है, जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसा करके तो धीरे धीरे करके फिर उसको है ना उससे कैसे हम ऊपर अपने आप को बांध सकते हैं सब जीवन की समस्याओं तकलीफों से। फिर उसको दिमाग में जिज्ञासा आती है कि क्या है हमारा जीवन का रहस्य, क्या है, क्या कारण है। The Lord is always ready to assist, to give us the best, but we are confused. We are always confused, enjoying this so-called enjoying this material energy of the Lord. देखा जाए हमें भगवान जो है ना हमें अंदर से अच्छी बुद्धि देता है हमें,
कि हम सही रास्ते में चले, लेकिन हमारा जो है ना हमेशा ध्यान है ना वो भौतिक इंद्रिय करके भौतिक आनंद भोगने का रहता है, इसलिए हम लोग है ना काफी समय लग जाता है कि हमको भक्ति में आगे बढ़ने की। In different ways, this confusion is coming through the misconception of the life, ignorance of the spiritual knowledge. ये शंकास्पद तब हो रहता है आदमी जब उसको जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, आध्यात्मिक ज्ञान हो क्या होता है और ये मंदिर की स्थापना किसके लिए की, क्यों की, जब तक कि उसको अज्ञान रहता है तब तक वो समझ नहीं सकता वो चीज को। So trying to enjoy this material energy, we are more and more confused. इसलिए हम जो है ना जितना भी ज्यादा हम कोशिश करेंगे अपने इंद्रिय तृप्ति का भोग करेंगे उतना ज्यादा हम जो है ना बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में शंका उत्पन्न हो लगी सृष्टि के बारे में, भगवान के बारे में। And Srila Bhakti Thakur, he wrote a book, and he called this book Sri Chaitanya Shikshamrita. उन्होंने श्री भक्ति ठाकुर ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम श्री चैतन्य शिक्षामृता। In the Sri Chaitanya Shikshamrita, Srila Bhakti Thakur is analyzing one by one the demon that Lord Krishna and Balaram killed in Braj. तो यहाँ पे जो दिखा रहे हैं कि भक्ति ठाकुर कैसे एक करके उन्होंने ब्रज में कैसे उन्होंने कृष्ण बलराम ने मिलकर उनकी हत्या की राक्षस एक करके उसके बारे में वर्णन किया गया है। And he is describing each one of these demons as anarthas or unwanted things that we should remove from the path of devotional service. इसलिए जो है ना हमें देखा जाए तो भक्ति ठाकुर बोलते हैं जितने भी जो राक्षस हैं एक्चुअली जो ये हमारे हृदय में जो बसे हुए हैं ये सब, और हमें जो उन्नति करना आध्यात्मिक उन्नति करना तो ये राक्षसों को हमें नाश करवाना पड़ेगा भगवान की कृपा के द्वारा। There is a particular demon, his name was Dhenukasura. तो एक विशेष एक राक्षस था जिनका नाम था धेनुकासुर। So Dhenukasura is representing the gross materialistic intelligence and the ignorance of spiritual knowledge. इसलिए जो हमारा जो ये जो धेनुकासुर है वो हमारा जो ज्ञान का जो है ना आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में हमारा जो अज्ञान का अंधकार रहना और उसके बारे में समझ नहीं पाना या उसके बारे में कुछ हमें ज्ञान नहीं होना कि अध्यात्म में भी कोई चीज होती है, आध्यात्मिक जीवन में कोई होता है कुछ, ये सब के बारे में अज्ञान आता है उसको। So do you remember the physical form of Dhenukasura? Who can say that? तो कोई बोल सकता है कि जो धेनुकासुर का जो है ना वो शारीरिक संरचना कैसे शरीर दिखता था उसका, धेनुकासुर का? You can put in the chat. You can put in the chat. The form of Dhenukasura was like ass. धेनुकासुर का जो है ना जो है वो गधा था, वो गधे जैसे पूरा उसका रूप था, Like a donkey. जैसे गधा होता है वैसे गधा जैसे उसका शरीर की संरचना वैसे थी, गधे जैसी। So in the Krishna Lila, it is said that the different ages of Lord Krishna, from his birth to the age of 6, this is considered Kaumara. And from the age of 6 to the age of 10, it is called Kaumara. Kauganda. तो जो पहली जो अवस्था उसकी जो होती है युवा जो छोटे में जब रहते 3 से 6 के अवस्था वो कुमार अवस्था था, जिसके बाद फिर 6 से 10 का वो पौगंडली अवस्था मान जाती, पौगंड आयु। From the age of 10 to the age of 16, it is Kaishor. It is ऐश्वर्य, हाँ Kaishor. किशोर अवस्था, ओके। तो ये जो है ना फिर 10 से लेके जो 16 साल की जो आयु है वो किशोर अवस्था कहलाती है वो। So and after
16, it is called Javana. इसके बाद जो 16 साल की उम्र के बाद में यवन कहलाता है, उनका उम्र को जवान कहलाता है, वो जवान कहलाता है. And he is Nama Jovana, eternally young. और वो है ना, देखा जाए तो ये वो हमेशा जो ऐसे ही रहते हैं, वो नौजवान ही बने रहते हैं, किशोरावस्था ही रहती है उनकी हमेशा, परमानेंटली स्थायी रूप से भगवान का ऐसे हमेशा युवक ही दिखते हैं, जवान दिखते हैं वो हमेशा. So when the Lord reached the age of 6 and he becomes Pauganda, then he is engaged in the activity of taking care of the cows. तो इसके लिए जो है ना, देखा जाता है जैसे वो पौगंड अवस्था में पहुंचते हैं भगवान, 6 साल की जो उम्र है उसको पार करते हैं, तो फिर वो है ना, जितने भी जो गाय हैं, बड़ी वाली गाय, उनका सब लालन पालन करते हैं उनका, तो ये जिम्मेदारी दी जाती है. So in the very beginning of this activity, the Lord, he was going with his friends sometimes, and sometimes alone with Balaram, through the different forests with the cows. तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरी अवस्था में, जो पौगंड अवस्था में देखते हैं कि कैसे कृष्ण अपने कभी कभी अपने सखाओं के साथ गाय चराने ले जाते, वन में जाते थे, कभी कभी वो अकेले जाते, कभी कभी खासकर बलराम के साथ में, और गायों के साथ में 2 गायों लेके जाते थे. तो ऐसे करके जो है ना, हमेशा वो ध्यान रखते थे कि कैसे हम है ना उसका जो गाय है उनकी कैसे हम सुरक्षा करें, कैसे देख रेख करें, ये उनके पौगंड अवस्था की लीला में. So once 3 of his friends, Sridham, Subal, and Stoka Krishna, informed to the Lord that there is a forest where there are palm trees producing delicious fruits, but we cannot enter there. तो इसलिए बोल रहे हैं, एक बार उनके मित्र हैं, जैसे तो मित्र सब मिलते, उनके जो सखा है वो आपस में सब लोग मिलके उनको बोलते हैं कि कृष्णा, हमको तो ये जो बहुत अच्छे जो है फल, उनको हमें खाने की इच्छा हो रही है, हमको भूख लगी है, हमें क्या करना चाहिए. फिर वो वन में जाके क्या करने का, सब पूरा प्लानिंग करते हो. So the cause was because in that particular forest called Talavan was residing a terrible demon, Dhenukasura, the ass demon, with his friends. तो देखा जाता है जब वो वहां पे एक्चुअली उसकी विशेष बात क्या थी, वो तलावन जो है जंगल, उसमें जो एक राक्षस था धेनुकासुर, उसके जितने मित्र राक्षस, तो बाकी लोग भी राक्षस थे, और सब उनका निवास स्थान था. इसके साथ साथ वहां पे ये जो है उसका जो जितने भी जो फल है, वो फल का भी जो उसका जो रस है, वो फल का रस निकाल के उसका आनंद लेते थे लोग. And they didn't allow anyone to enter there and enjoy the delicious fruit of the palm tree. तो उनका ये भाव था कि कोई भी है ना यहाँ पे ऐसा नहीं आए कि कोई भी यहाँ पे जो फल खाने आ जाए और उसको है ना उसका आनंद भोगे फल खाने का, ये नहीं चाहते थे राक्षस लोग जो होते हैं, उसके जो साथी कहते हैं. So Lord Krishna, along with Balaram, they decide to enter. तो इस तरह से कृष्ण बलराम ने दोनों ने वहां पे प्रवेश करने का एक योजना बनाई उन्होंने. And then they were commenting each other how beautiful was that forest with many flowers, with many trees, with creepers, with peacocks dancing, with deers, with different birds. इसलिए यहाँ पे जो बताते हैं वो उनके जो मित्र के, वो कितना अच्छा था वो जो वन था, वो वन में कैसे कितने सारे जो वृक्ष थे, कितने सारे फल थे वहां पे, कितने सारे लताएं हैं और सब लटकते थे, बहुत ही खूबसूरत था वो, और उसमें बहुत सारी जो खूबसूरती जो है वो उसमें थी, विद्यमान थी. So finally they saw the palm trees. और इस तरह से जब उन्होंने वहां पे गए, उन्होंने देखा कि एक बहुत ही पाम का जो है वो वहां पे वृक्ष, पाम का वृक्ष था एक्चुअली. And they checked the trees and the fruit came down. और उन्होंने जैसे वो झाड़ को हिलाया, और झाड़ में से तो फल नीचे गिरने लगे.
So following down the tree, the fruit, Dhenukasura, he was aware that about the presence of the Lord and his friends. तो इसलिए धनिकासुर ने देखा कि वो जो कुछ जो वृक्ष से कुछ फल नीचे गिरे हैं और वो समझ गया कि इसमें जो है ना कृष्ण उसके साथी यहाँ पे हमारे जो वन में ये घुसे हुए हैं, यहाँ पे आए बगैर किसी हमारी आज्ञा के. So he appeared attacking the Lord, and Balaram took this Dhenukasura from his legs and he killed him, throwing to one palm tree. तो ऐसा करके जब वो उनके ऊपर आक्रमण करने आते हैं तो बलराम ने भी क्या है ना उसको जो धनुकासुर का जो है उसके टांगों को पकड़ के उन्होंने उसका एक जो से घुमाते जो गोल गोल घुमाते उसको जो एक जो पाम का जो वृक्ष था पाम के वृक्ष पर फेंक दिया उसको. His friends also came, the demon friend of Dhenukasura, and they got killed also. लेकिन इसके बाद जब धनुकासुर की मृत्यु का उसके मित्र भी आए उसकी मृत्यु के बाद उसका बदला निकालने के, लेकिन उनके मित्र के उनकी भी हत्या कर दी गई. So this Talavan forest, this beautiful forest called Talavan, it representing our heart, the heart of devotees. तो इसलिए जो हमारा जो दिखाया तालवन जो ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे जो एक तरह से बगीचा, ये हमारा इसकी तुलना हमारे जो हृदय से भक्तों के हृदय से की गई. बहुत ही खूबसूरत था वो, तो हमारे हृदय भक्ति का भी एक खूबसूरत हृदय ऐसा करके तुलना की गई. So by nature, living entities are devotees of Krishna, and the heart of living entity is the perfect and more suitable, is a suitable place to worship the Lord. तो इसलिए जो है ना देखा जाए तो ये जो डेवोटी जो हमारा जो है जो हृदय है वो भी बहुत ही देखा जाए तो शुद्ध भक्त है ना सभी लोग ऐसे भगवान के मूल रूप से. तो इसलिए कुछ जो भक्त आते हैं उनको यही जल से वो सब क्रियाएं करते हैं और ऐसे करके वो जो हमेशा ये चाहते हैं कि हम कैसे मतलब अपने हृदय को शुद्ध रखें, भक्ति ही चाहते हैं और कैसे हम उसका आनंद उठाएं, फिर भक्ति करने का आनंद उठाएं. But due to the gross materialistic intelligence and the ignorance of spiritual knowledge, we are getting contaminated with material desires. अध्यात्म ज्ञान के अभाव में और हमारे जो इंद्रिय तृप्ति का जो है उसका जो हमारी इच्छा है वो उसके कारण जो हमें है ना ये जो रियल जो आध्यात्मिक जो अनुभूति है उससे हम वंचित रह जाते हैं. And these material desires are anarthas, unwanted things. और ये जो है ना जो भौतिक जो इच्छा है वो एक्चुअली देखा जाए तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक चीजें हमारे हृदय में देखा जाए. So we have to remove all these anarthas, and the person who can remove the anarthas is a spiritual master. और एक्चुअली देखा जाए तो ये जो हमारे अनर्थ हैं जितने भी हम इसको ना जितना जल्दी हो सके हमारे हृदय से इसको निकालना चाहिए और सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो हमारे हृदय से अनर्थ निकाल सकता है, वो है हमारे गुरु. So Lord Balaram is acting as a spiritual master. He killed the Dhenukasura. Dhenukasura is representing this unwanted anartha. इसलिए जो धनुकासुर वो भी एक्चुअली क्या हमारे जो इच्छा है, जो भौतिक इच्छा है जो हमें दूर लेके जाती है भक्ति से, भक्ति में हमारी बहुत बाधा डालती है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है. So that's why we should do like Narada Muni approaching to his spiritual master, Lord Brahma, who got the knowledge from Lord Krishna himself. इसलिए जो है ना Then we will get the proper understanding of material creation, spiritual nature, everything. इसलिए यहाँ पे भी नारद मुनि है जो देखा जाए उनके पिता एक्चुअली आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, उनसे ज्ञान की वो अपेक्षा करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की और भगवान लीलाओं की वो अपेक्षा करते हैं, क्योंकि वो देखा जाए तो उनके बेटे थे और लेकिन क्योंकि उसका बहुत अच्छी सेवा करते थे, लेकिन कुछ ऐसी कुछ बुराइयां थी उनके हृदय में, इसके कारण कुछ अनर्थ थे, इसके कारण वो कर नहीं पाते थे. And then all this misconception of spiritual knowledge
this ignorance of the spiritual knowledge will be removed. Just worshiping the lotus feet of the Lord. तो जैसे भगवान चरण कमलों की अगर हम पूजा करेंगे तो हमारे अंदर जितने भी जो अज्ञान का जो अंधकार है वो है सब हमारा खत्म हो जाएगा. अज्ञान का अंधकार हमें हृदय दिव्य ज्ञान से प्रकाशित होगा. So the time is over, and I would like to hear any question or comment regarding this particular topic. आपको अगर इससे कोई प्रश्न है कुछ इस विषय के बारे में कृपया करके. प्रभु जी, you told this lamp is the actually this one fire lamp. So fire is our heart. So what about this incense? We are offering to incense to the Lord. Different elements. Once I was reading from Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada some explanation of different items. Different items. And it is said that, for example, when we offer water to the Lord, we are offering the element of water. When we offer fire, we are offering the fire element. When we offer the flower, do you know what is a flower? Anyone know what is a flower in the Arctic? What is the meaning of the flower? Earth element. What? Earth element. Exactly. That means the earth. Because the flower is bringing the fragrance of the earth. And that's why we should not put perfume to the flower. Because already the fragrance is there. Even if we don't feel, the Lord will feel. And like that, different elements are representing different things. Shamara, for example, is offered because the Lord, for the pleasure of the Lord. Shamara and pickled feather, because he is the supreme personality of Godhead. This is something that is offering to kings, personalities like that. Same with the incense also. Sign of opulence. All these elements are present there. Incense, what they're representing? Incense? I don't remember exactly. That was an element representing the sky. Maybe it was a incense, but I am not sure. But some of the items are just representing the items, special items for high personalities. Yes. So, my very close and dear friend Govinda Prabhu, he has a question. Prabhuji, please go ahead. Unmute yourself. Hare Krishna, Dandavat Pranam to my very, very dear Govardhan Prabhu. Hare Krishna Prabhu. It's a great pleasure. It's a great pleasure to see you and have you, the feel of Vrindavan in you. It is my pleasure also. Feeling cold, but happy to see you. Okay, thank you. So I'm going to ask you two questions. First question is, this Talavan, what you described, this is physically available in Vrindavan even now? Are there palm trees, same like that? Well, Talavan is there, and it is said in the Brahma Samhita prayers. In the Brahma Samhita prayers, the land of Braj is described with Chintamani stones, but we cannot see. Okay. In the same way, many of the items like the palm tree and many other things described in the Brahma Samhita prayers, and Srila Prabhupada is also describing in his Krishna book, we cannot see with these material eyes, but are there. So the palm tree are not exactly there right now, not for our physical
vision, but this is part of the environment of Braj Bhumi. But Talavan forest is one of the present forests. Yes. Okay, thank you. Thank you very much, Prabhu. This is where? Around, in and around which near one? In Vrindavan? This is near which vana? I cannot give you the exact location. We go there. Okay. I cannot explain you exactly what. Like Radha, near Radha Kund, Govardhan, like No. that. No, it's No, it's somewhere far away. Mm-hmm. Okay. No, it's not. It's not in that area. Okay. Braj Bhumi is huge. It's very big. Okay. Okay, Prabhu. So my second question to you is, we were discussing that. Yeah, this is like we were discussing about the meditating on the lotus feet of the Lord. So now at present we all have access to the deity form of the Lord, where we can see the lotus feet of the Lord, like Radha Shyam Sundar, or we can see the lotus feet of Radha Raman, or many deity forms, Radha Madhav. So many deity forms are there, and we can see the physically we are able to see. No, maybe we are not able to feel the spiritual connectivity to it, but following the orders of our acharyas, we are seeing and meditating. So, is it the right way to meditate on the lotus feet of the Lord, or when we describe the Srimad Bhagavatam, the first two cantos are the lotus feet of the Lord. The instructions in the form of instructions in the Bhagavatam becomes the lotus feet, and we need to imbibe and worship. So how do we do it? Probably it's easy for a layman to see the lotus feet of the Lord, and then that's it. It may not be easy, but at least there is something objectively clear. So this is my second question. Thank you. Okay. We should, according to Srila Prabhupada, we should meditate in the Lord, and our meditation starts meditating on his lotus feet. This is prescribed, and that's why is one of the limbs of devotional service, worshiping his lotus feet. So it is proper, and when we are worshiping the deity, when we are offering fire, or we are offering the flowers, or we are offering water, when we are, for example, performing Abhishek, we start always from his lotus feet. So that's the proper way. So we should meditate on his lotus feet. The lotus feet of the Lord, why is it is called lotus feet? It's not because exactly has the form of lotus, but it is because even if the Lord can be present in this material universe, he's never contaminated as a lotus flower. The stem is protecting from any kind of dirt from the water. It's like that. So yes, we have to meditate on the lotus feet of the Lord. That's the proper way. Yeah. So the deities, what we are seeing, like rather the deity form, lotus feet, the deity form of the lotus feet is what we need to focus when we chant or when we offer. We focus on that and try to imbibe that in our consciousness. Is that what we say? Yeah, that's correct. We meditate in the lotus feet of the Lord, and then
the Lord will be manifested. And then all your desires will be satisfied. We have the example, for example, we have the example of Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, he wanted to be very powerful as his father. He wanted to have a kingdom as his father, a big kingdom, and be very, very powerful. So then he decided to go to the forest. And when he was meditating, then the Lord came. Having the darshan of the Lord, the Lord was very pleased with him, and he was ready to give any kind of benediction. In fact, he asked, which kind of benediction do you have? But just having the darshan of the Lord, everything was fulfilled. He didn't want nothing. So in the same way, meditating on the lotus feet of the Lord, the son of Nanda Maharaj. So the Lord will be manifested one day in our heart. And then all the material desires will be removed. Thank you so much. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. We're not seeing you. Where are you? No, I don't know. I'm on my computer and I have switched on my video, but the video is not displaying. Like, I don't know why. Maybe there's a mist on that this thing. Omnipresent. No, my video is on, but I'm not able to see my also. So there is something. I don't know why Krishna doesn't allow me to take blessings from Prabhu. You're doing Adrishya Sloka. You have to say Adrishya Sloka again and make it Drishya. Hare Krishna. Any other question or comment? I don't see in the chat. Prabhuji, can you just elaborate a little bit on the importance of Vrindavan Dham and basically the parikrama that is done in Vrindavan, so that the devotees can get motivated for going for this yatras? Okay. The name of this land is Braj. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada is defining the word Braj as to walk. He say Braj means to walk, walking, the action of walking. So when we are performing parikram, when we are walking around different places of Braj Bhumi is not different than Krishna, then we are approaching to the Lord. So that is the importance to do parikram, according to Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. And any patyas to be formed, some important places that we should not miss, or the importance of doing at a particular time, which is the most beneficial thing for the previous people who have passed away. Anything in this connection also you can highlight. Well, okay. The month of Kartik is the most secret month of the year. So it's very auspicious. Nevertheless, in Brajabhumi, you can do parikram or take darshan of the deities any time of the year, any day of the year. There is no particular difference because the benefit will be there. So what is the importance of Brajabhumi? The Brajabhumi is a residence place of Lord Krishna, Hare Krishna. So Lord Krishna is residing in Golok Vrindavan. So when he wanted to come to perform his pastimes in his form as Shama Sundar, he informed to Srimati Radharani, his eternal consort, partner. So Srimati Radharani said to him, initially she refused, but she said, I will go there only if there are some special part of the environment of Golok Vrindavan, some very special elements.
And these elements, these items or special places are Yamuna River, the forests of Vrindavan, and Govardhan Parvat, hill, Govardhan Hill. So these three personalities descended from the spiritual sky. And then Radha, Krishna, and some of his associates, they came from Golok Vrindavan. And they performed their leelas in this very holy land of Brajbhumi. So because the Lord was present here, and he was doing many activities, so we have these holy places, we have different tirthas. And after the departure of the Lord and his associates, the devotees started coming. Lord Chaitanya Mahaprabhu came, Nityananda Prabhu came, different Goswamis from Sadhus Goswamis from Bengal and Orissa, they came and they were residing and they were doing parikram, performing parikram daily and vibrating the holy name and studying the scriptures and writing books and practicing very powerful sadhana. And after that, more personalities like Vishwanath Chakravarti and Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada, and the present followers of Srila Prabhupada, and many pilgrims comes every day. They are coming every day to Braj and performing parikrams. And that way, this holy place that already is sacred, is holy due to the presence of the Lord, is becoming more energetic due to the presence of all these personalities coming until now. Coming and performing parikrams is like creating one field of energy. And that's why when you come to Brajbhumi, you feel some energy. And the energy is so strong that if you are not tuned, then the stream is taking you. So this is like when you are swimming in a river. The river has a stream, and you have to be expert swimming. Otherwise, the stream is taking you. It's taking you away, and it's dangerous. So we have to tune ourselves. We have to come to Braj with the attitude of devotional service. And then we will swim properly in the wave of this nectarian river. So, but if we are coming with material desires, we will have troubles. Srila Prabhupada, he's saying that we should visit holy places, not just to see different places, not just to take bath in the holy river. The real purpose of visiting one holy place is to have association of devotees living there and get the benefit of that association. What is the benefit of association? Spiritual knowledge, blessings, performing service to them, and being engaged in service under their direction. So it's not just to visit one holy place and go from this place to other place and just praying in one temple, in another temple. No, we can take advantage. We can take full advantage approaching to devotees, according to Srila Prabhupada. And of course, you was talking about the person who is about to pass away or who passed away. According to our Vaishnava tradition, Sri Vrajabhumi is the ideal place to leave the body.
we can be connected, we can be promoted to Golok Vrindavan. Why? Just to come and leave the body here? No, because staying in Braj Bhumi, having the proper conscious, we will be connected to the Lord. That's the importance. And among all holy rivers, they say that the river of Yamuna River is the most holy of all rivers. The most holy, the most sacred of all holy rivers. So that's why also is very important for Gaudiya Vaishnavas, because we are not looking for mukti, you know. So we are looking for Krishna Prem. Yamuna River came directly from Golok Vrindavan to offer service to the Lord. And Yamuna River is able to offer Krishna Prem to anyone. And there are many places also very important to visit there. Govardhan Hill. Govardhan Hill is not different than Krishna. Krishna saying the 10th canto of Srimad Bhagavatam, when the Govardhan Puja is being performed, he say, there is no difference between this hill and myself. Why Govardhan is not different than Krishna? Because when the Lord is coming, many personalities, they want to come to assist him. Many of his personal associated from Golok Vrindavan, they come. Many demigods also, they come to assist the Lord and be promoted to Golok Vrindavan. But also, three very important personalities engage in the activities in these material universes. They come. And they are taking the form of three hills in Braj Bhumi. Braj is a very flat land, but there are three prominent hills. And these prominent hills are three prominent personalities. Lord Vishnu, Lord Shiva, and Lord Brahma. So someone can say the name of these prominent hills in Braj Bhumi? Okay, I will say. One of the prominent hills is Varshana. Varshana, the residence place of Srimati Radharani, has 4 faces. And 4 faces means 4 heads. So Varshana is the representation of Lord Brahma. And then Nandagaon. Nandagaon, the residence of Nanda Maharaj, is the residence of Lord Krishna. It's in the top of a hill. And that hill is representing Lord Shiva. In fact, Lord Shiva, knowing that the baby Krishna was already here, he came from Mount Kailas and he wanted to take darshan of the Lord. So approaching to the residence of Nanda Maharaj in Nandagaon, but he was like one tantric monk. His body was covered with ashes. He has one scorpion and a snake in his neck, like that. So Yashoda Mai, being a mother, and mothers, they are always trying to offer the best and avoiding any kind of suffering to their babies. Nothing more distressing than one child crying. This is something really very difficult to control, and it's a big distress for the mother. So Lord Shiva came to the residence of Nanda Maharaj, and when
Yashoda Mai opened the door and she saw the face and the appearance of that tantric monk. Immediately she was thinking, if my baby Krishna see his face, will start crying out of control. So she rejected him, and he left, and he went to one forest nearby. This place is known as Ashishwar Mahadev, and he was meditating. He was meditating on the lotus feet of Lord. The meditation of Lord Shiva is always meditating on the lotus feet of the Lord. So when he was meditating on Krishna's lotus feet, then Krishna, he got the connection of him. This is like Wi-Fi. You have one device, and there is one, there is a Wi-Fi. And when you open the possibility to get any connection, you can get that connection, one of these connections. So Lord Shiva, he got the connection of Krishna through the meditation. And then Krishna came to know that his devotee was trying to get his darshan, but he was rejected. He started crying out of control. And then Yashoda Mai was in big distress, trying to control him. And the ladies from the neighborhood, they came assisting, and nobody could control him. Thinking about what happened, they got the conclusion that maybe Yashoda Mai, she got the conclusion that maybe she commit aparadha with that tantric monk. So they started searching for him. They found him. They broke him. And then Yashoda Mai was behaving in very different way, because her interest was to satisfy his baby Krishna, her baby Krishna. So she was given the proper welcome that we should give to any Vaishnava visiting our residence or visiting us in office or whatever. And she was asking, how can I serve you? So Lord Shiva said, I just want some remnant from your baby Krishna. So she broke the remnant, and when Lord Krishna was satisfied, Krishna stopped crying. When the Lord is satisfied, when the devotee of the Lord is satisfied, the Lord is satisfied. So, and then she was asking for blessings. That's something normal. Some sadhu is coming to visit. We are asking for some special blessing for our spiritual advancement. And Lord Shiva says, since today, no one, any kind of living entities will disturb this place. Because as mother, she was worried always about this kind of disturbance of asuras, even if she didn't understand that they were asuras. So that's why Krishna never killed any demon in Nandagaon, because any demon approached there due to the benediction of Lord Shiva. And Govardhan, in the third hill, is Lord Vishnu. It's Krishna himself. And that's why he's worshipable. That's why we worship Govardhan. Because it's not different than Krishna. Krishna said in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. So there are many places, we can say every place, different forest. Then also many places where exalted Vaishnavas were residing, like the Goswamis, temples built by them, places where they were meditating or practicing sadhana. Rajbhumi is plain of nectar. Prabhuji, in Govardhan Hill, there is one thing we climb very near the hill, which has got Narasimha deity on top. What is that turn? Yes, this is not exactly in the Govardhan Hill, but there is a temple beside Govardhan Hill. Yeah, very near. This is one of the few
temples of Nrsimhadev in Brajbhumi. This was introduced by, according to the local people, worshipping Nrsimhadev is not part of the Brajavasi tradition. Because in Braj, the only protector is Krishna and Balaram. They are the original and most powerful protector of Vaishnavas. But sadhus coming from outside, like from Bengal, Orissa, they introduce the worship of Nrsimhadev in that place in Govardhan. In Vrindavan, there is another place also. There is a temple in Vrindavan with a beautiful Nrsimhadev deity also. Yes, but regarding your question, yes, there is a temple of. The name, I forgot the name of the hill. There's a name. You know, when I went with last time with Patri Prabhuji, we had gone up and I forgot the name. There's some story also they told us. Right? Yes. So that's the answer for your question. Temple is there, but it's not exactly climbing Govardhan. It's beside Govardhan, but it's constructed with steps. Correct. Yeah. You climb some steps, but it's beside Govardhan. Yeah, right. You're right. So, any other question? And I don't see any more questions in the chat, but if anybody has any more questions before Prabhuji winds up, because he has got other programs and all, he's a busy devotee there now, and we don't want to keep him waiting. So please raise your hands quickly and take some more nectar in case you are wanting to. So I presume there's no more questions. Govardhan Hari, thank you very much for a wonderful class and so much nectar you gave us today. And just reintroducing your grace, probably also, as I mentioned earlier, there's a lot of seva to help many of the elderly people who are also passing out from the world and stabilizing them so that they're focused in Krishna's lotus feet during the end journey. He does a lot of seva like that. And also during this cold season, he does a special seva of distributing blankets and warm clothes. So I had sent some messages regarding some help that you could extend, and some devotees had it already. It is not generally sent to everybody because it's restricted here to do that. So I have requested, and if anybody still wants to come forward and help Prabhuji Seva, you're most welcome. I can share his account details to you. So kindly do your best so that all the Vaishnavas and Vaishnavis coming to Vrindavan in the cold season, they are not in trouble and they can get good darshan and stay in good health in these cold times. So thanking Prabhuji and wishing him the very best of stay and safe also during this Omnicon Babaji's new event in Vrindavan and other areas. So we... Babaji is also there. He's everywhere. Yes. He's very merciful. He's visiting every corner of the planet, giving his blessings. Yeah, looks like he first came to Vrindavan. That's why he's trying to serve everybody. Anyway, so during my visits to UAE for many years preaching, actively was going there since 2007 till 2014. 2 times every year, 1 month in summer, 1 month in winter, and I was very much connected to this very dear Shamadesh Yatra. Maybe some of the present devotees don't remember me. Some they maybe remember me. Many of those devotees, they left already. Then they came back to India. But one thing that I used to say in the end of every lecture I was giving is, please come to Vrindavan. You are most welcome. But whenever you come to Vrindavan, bring some offering to the lordships for the pleasure of the lordships. So I'm always encouraging devotees
to come to Vrindavan not with empty hands. Bring something for the pleasure of the deities and deliver in the deity department. Huh? So Sudama Vipra, when he went to take darshan of the Lord, he went not only with a request, he went with his most humble offering, just a handful of grains, low quality of grain. But the most important was that he was offering from his heart. So I hope to see all of you in Vrindavan, and please bring your offerings to the Lord, and you can deliver in the deity department to the head puja. That will be for your spiritual benefit. I still remember picking up Prabhuji on his first trip to Shamadesh and driving him down to CBS Global. And Sugarkrishna Prabhu was there. Yes, 2007 or 6 was it? Yeah, 2007. Okay. 2007. And whenever you was going to pick up me, you was telling me, "Oh, Prabhu, this tilak is too evident. Oh, Prabhu, please put your cap covering like this." And that time was, UAE has more restrictions. I was going from Bardubai to Srinathji temple. I am Srinathji devotee. So I was going every day for Sringat Artik, taking darshan, the most beautiful darshan. And sometimes I was forgetting, I was going with dhoti. Thanks Krishna, never happened nothing. I think now situation is different, and at least in Dubai, it's possible to be more evident as Vaishnava. Yes. So many members, so many nice incidents. Yeah, that time Shahjahan, it was very strict times, and it would have been very difficult. In fact, His Holiness Bhakti Vishwamitra Swami Maharaj was stopped in my car once in the border of Ajman, and Maharaj, is like very this thing, open. And he was not bothered about the police and all, and he was like telling him, "I've just come on preaching." I said, "Maharaj, please don't say all this. Relax." And with great difficulty, I got him out of the place and drove him back. So you got to be careful. One of the most wonderful personalities visiting UAE, I never will forget, is he's challenging all rules and regulations, all government rules and regulations. Is His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj going with his accordion, and he started his kirtan in the airport inside. Yeah. And everybody, even the officer, they are dancing, and incredible, very memorable times. And I am really very much in debt with all this Damodar Shamadesh Basi devotees, and also from Avatari Desh and Damodar Desh and Anand, what's the name? Anantanand Desh. Anantanand Desh, Gauranga Desh Yatra, all these yatras, I visit all these. I was doing parikram, taking the blessing of all these exalted Vaishnavas in UAE. I was going from one place to other place. Thank you very much from the deep of my heart. Yeah. Please shower your mercy and also keep sending prasadam. Okay. Okay, to get prasad, you have to come. Someone to have to carry this prasad. So whenever you see anybody from UAE, please send to Shamadesh. Say that, please take it for all the devotees here. Okay, whoever comes to Vrindavan must to know that Radhabhav Gaura Prabhu is addicted to peda. But he eat alone. He is not sharing. He's always asking, "Send me peda, send me peda." Thank you very much. Hare Krishna. Let's pray for you. Let's Hare Krishna from all of us. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Mango Prabhu, thank you for your service translating us so many times.
Hare Krishna. Prabhu, ask your mercy, Prabhu. Hare Bol. Ask your mercy. Dada Prabhupada, ask your mercy. Please keep me engaging in all your Vaishnava service. Hare Krishna. I just had his darshan in Bombay. So Prabhuji was there. But he has become a little thin after Mataji left from Moscow. Yes, timetable all getting disturbed. No problem, Prabhuji. We'll make sure that you come back to Shamaji soon. Hari Hari. Hare Bol, Hare Bol, Hare Krishna. Thank you. Some announcements for this thing. I request all the devotees to be a little more practically prudent, because again this COVID has surged, and even in UAE the cases have gone to 1,000. I read yesterday, and it is increasing many times. So in case you are traveling or you are going to the shopping center and all, not like, it was really relaxed 3-4 months now, and suddenly people have forgotten that. So you have to be very careful, wear your special mask, and make sure even the children are protected, because this Omicron also is affecting children. So take extreme care. Don't be on a light mode, but be very serious when you go out, especially in a crowd. So I request everybody to take care. This is also a request sent by His Holiness Swami Maharaj the other day when I was chatting with him. He has also sent his prayers and blessings for all. So we also pray that all the disciples of His Divine Grace Srila Prabhupada are in the best of health and they stay safe, because they are traveling so much around the world to preach for us. So let's chant for them also. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Our Swastik Prabhuji has gone on short holiday and also with Murli Prabhu and family. Both of them are traveling to Dwarka and I heard to Jagannath Puri and all. So let's pray for the safe journey. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prayer request also for birthday greetings, actually, for Uttama Tumangi Malini Devi Dasi. Tumangi Malini Devi Dasi Mataji. Yes, she's our good god sister and wife of Ravi Teja Prabhu. And she's recovering from some bit of health issue that she had faced due to an accident. But we pray that everything is fine, and best wishes for her birthday today. Please kindly pray for us. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sudarshan Srinivas Prabhu is in the group. Oh, yes, no, Sudarshan. Actually, as I announced last time that we have targets for this month of marathon. A month के लिए हम लोग ने target रखा हुआ है और शामदेश की target है 5108 और हम लोग बहुत पीछे हैं. Srinivas Sudarshan Prabhu is after me saying that nobody is giving help, but recently he has given me some little bit of good news that we have reached 3,500 from our side in Shamdesh. But हम लोग और week बाकी है. We have to touch 5,108. So kindly help to make this successful. And otherwise, Sudarshan Prabhu keeps on calling me 7-8 times a day. It's a problem actually. So I want to avoid getting pressurized by him. So please help me to get this target. All of you all need to push your group heads and Bhakti Riksha members. It's a good season and best way to preach, because in India now people cannot go to temples, so at least they should get a Bhagavad Gita at home. Any relative of yours, any wedding that you have, anything there you can pass on, please do that. It will be a great service for His Divine Grace Prabhupada's movement, and we must do our best. Also, I request all the devotees who are going to appear for their exam still for Bhakti Shastri and Bhakti Vaibhav. Best of luck for their studies. Also, some devotees who are planning to go for their initiation. So if their exams are balanced, be in touch with His Grace Govinda Prabhuji for the guidance and paperwork, etc., so that all those things can be completed. So that's all for announcements, and don't see any more message also. That's it. Prayers also not required. One second, I just saw a message. Let me check. There it is there. Okay, we have prayed for them. Okay. So thank you. So we can spotlight the other devotees. Prabhuji, Sadhana Prabhu.
Hari Bol, Hari Bol. Hare Krishna, please accept my humble obeisance. Hari Bol. हरे कृष्णा बहुत गोविंद प्रभु की जय हो। प्रभु की जय हो। प्रभु जी योग निद्रा में लगते हैं आप। Hari Bol. Hare Krishna to everybody. Please pray and bless me. Govinda Prabhu is getting angry day by day. What is his secret? Your association. प्रभु जी क्या लेते हैं फिर दिखाई न दे। Hari Bol. प्रभु वो कैमरा काम नहीं कर रहा था, अभी काम शुरू हो गया। आप उसने आप पूछेगा बोल के कैमरा कभी समझ में आ गया, आपने आप बोल दिया। इतना तो करना स्वामी। गौरा हरे कृष्णा। Hari Bol, Hare Krishna, Hari Bol, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hari Bol, Hari Bol, Hare Krishna, Hari Bol, Hare Krishna, Hari Bol. Also, I would like to have praise for Hare Krishna, please. Hare Krishna. Yes, 1 minute. Paramatma Prabhu and family are also traveling next, I think early first week of Jan. That's what he told me. He'll also pray because I don't know if they'll be there next Friday during the class. Paramatma Prabhu, when are you traveling exactly? Prabhu. Yeah, when are you traveling exactly? When are you traveling exactly? Yeah, 6th January, Prabhu. Okay, let's pray for him also. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Please pray for my travel also. Maybe again I am traveling to Calcutta for Bhagavatam Saptah. Maybe Rajkot also, different cities. So please pray for my good health and so that I can serve all of you. Good day, Prabhupada. All Guru Prabhupada nicely. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare. 29th, Charmadi birthday also. Whose birthday? Charmadi birthday 29th. 29th. Okay, advance. Okay. Best wishes for her, Charumati also, and wishing her the very best for her future. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you, Guruji. Hare Hare. प्रभु जी किसी की मतलब जन्मदिन से पहले ब्लेसिंग मत लिया करो। Okay. Hare Bol, Hare Krishna, Hare Bol. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Bol, Hare Hare. Hare Bol, Hare Krishna, Bhakti Prabhu, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Krishna, Prabhu, Hare Krishna. सारे भक्तबिंदु के श्री चरण में दंडवत प्रणाम, आशीर्वाद दिएगा। Hare Bol, Hare Bol, Hare Krishna, Prabhu, Hare Krishna. आज अतिचंद्र प्रभु नहीं है क्या? नहीं था। Hare Bol, Hare Bol. Hare Krishna, Prabhu, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Krishna. Hare Bol, Hare Bol, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare आप अकेले हैं? कैसे है? सब ठीक ठाक? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Bol, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol, Hare Krishna. महारानी Hare Bol, Hare Bol. हरे कृष्णा। Hare Bol, Hare Krishna, Hare Krishna. हरी हरी। केके किधर है? अर्जुन जीवन प्रभु इधर ही अंदर खेल रहा है प्रभु जी। अच्छा, उनको उनका अटेंडेंस लगाना चाहिए। आप फ्राइडे को कंपलसरी है, उसको मंगल आरती छोड़ नहीं सकता वो। हरि बोल। उसका ट्रेनिंग अभी एक सेकंड लेके आता हूँ। हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। Bless us for our spiritual progress in Krishna consciousness. हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल। Hare Krishna, brother. Finish, bro. How is Bhagavad doing, Paramatma Prabhu? Hare Krishna, Prabhu is on screen. You can see it. Hare Krishna. Ah, Bhagavad, எப்படி இருக்கே? Good to see you, man. हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्रणाम।
Hare Krishna. Divya Prabhu, wait for a second. Arjun Jivan Prabhu is, he is come. Okay. KK. क्या है इसका? हरि बोल. Krishna Kripa. हरि बोल, हरि बोल. कृष्ण कृपा, हरि बोल. हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्ण बोलो बेटा, हरे कृष्ण बोलो. हरि बोल. जय हो, जय हो, जय हो बोलो. पंजाब का पुत्र. हरि बोल. थैंक यू गुरु जी. ब्लेस हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरि बोल, हरे कृष्ण. मांगो प्रभु अच्छा आशीर्वाद दे देना. हरि बोल, हरे कृष्ण बोल. आपकी तरह ये भी बहुत ही अच्छा बने. थैंक यू प्रभु जी. हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. Prabhu, all completed, Prabhu, now it's okay? Yes. We'll end here. Thank you. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. समस्त श्याम देश भक्तवृंद की जय. प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. अनंत कोटि वैष्णव. Can I end, Prabhu? Yes. Also, you can announce regarding collections for sannyasi seva and everything. Let me put my video once again. So that they are aware that you are collecting it. Please kindly help us for to collect monthly contributions. We need Lakshmi to support all the Vaishnava seniors devotees, and also for our Bila. Need a support. Kindly contact me to send the. Usually, before 2020 used to support me very well. Nowadays, nobody is supporting us. Please, we request you all. Send us some Lakshmi. We have to support other devotees in other temples as well as our yatra as well. Kindly send me Lakshmi. I'm here to hear from you all. If you need any support, I will come there and collect Lakshmi also. Please contact me anytime. Hari Bol. Hari Bol. Jai. Hare Krishna. Now I can wind up, Prabhu? Yes, you can. Hari Bol. Hare Krishna. Thank you very much to all.